So we have the trajectory of the particle, that is this one. I will just make the diagram in a rough way. वैसे तो हमारा रफ वे में सारा बनता है. And this is a cylindrical geometry which we have to consider. Means all those electrons which are in this range, means in this particular volume, they are going to interact with this particular particle which is going into the matter. And this we have said this is delta x, and this distance is b minimum. Let me write it here. This is b minimum, and this one is b maximum. And how much momentum transfer to each electron, that was ze square divided by 2 pi epsilon naught b into v. V is the velocity of this incoming particle. Let me write it that also. This one. The particle which is going in, that is having a velocity v, and also it is having a charge ze. Then we have written that the energy which is transferred to each electron, I have written in this, I think, symbol, capital E and a suffix with small e. So that was z square e4 divided by pi square, 8 was there, epsilon naught whole square, b square, v square, and mass of electron. Maybe me लिखा होगा, या हो सकता है लास्ट टाइम मैंने me को कई जगह पे मैं m लिखूंगा, because बहुत सारे symbols हैं. So instead of कि ऐसा ना लगे कि m into e है, it is me, we will write m. M means mass of electron. Okay, so this is the energy which is transferred to one single electron, which is in this particular range, which is a shaded volume of the cylinder, and which is within the matter, obviously. And the particle is going into the matter. Then we have found the total energy, that is how much that energy which could be transferred to all those electrons which are present in this particular volume. So हमने वो integration करके निकाला था. So that is, we will call it as how much delta E, actually जो मैंने लिखा था ना expression delta E, which is this one, E into dN. dN is the number density for this particular volume. If you take a small volume, number density, फिर उसको आपने throughout the volume integrate किया, so you will get the total number of how many electrons are there, and each are having certain energy which is being transferred by this particular particle. So they get kinetic energy, and these kinetic energy result in the ionization of the atoms. And ultimately the energy which is gained by the electron is actually the energy lost by the ion. So we can equate these two equations. So let me first write this one, and we have done this integration and we have got this expression, z square e4, small n is number density, and delta x is the thickness up to what the particle is being moving within the matter, and then it become a rest particle, or it is embedded in the system or matter. Epsilon naught square me के जगह मैं m लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, m is the mass of electron, not the mass of incoming ion or particle. Mass of electron. V square, and natural log, there was a limit of b minimum to b maximum. As a b term is dn में included है, so that is why we are writing this, because 1 upon b square का term आया था. So that is b maximum, 1 upon b का term आया था, b minimum. So this we have found, and this is the energy gained by the electron which are in this particular shaded volume. And delta x को मैं इधर लेके आ गया था, so this we have written delta E by delta x, which is positive for electrons. ठीक है, and that will be negative for ion or incoming particle. So we can write that minus delta E, अब मैं delta को remove करके del E by del x लिख रहा हूँ, and this is the energy loss per unit distance by the particle, not by the
इलेक्ट्रॉन तो गेन कर रहा है, पार्टिकल लूज कर रहा है. So this expression we can write as z square e4, ये n है, x नहीं है, 4 pi epsilon naught square m v square and ln of this b maximum and b minimum. So this is called as stopping potential for any given ion for a given material. तो लेड के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट हो सकता है फॉर अल्फा पार्टिकल, और गोल्ड के लिए डिफरेंट हो सकता है फॉर अल्फा पार्टिकल, फॉर प्रोटॉन आयरन के लिए डिफरेंट हो सकता है, फॉर प्रोटॉन एल्युमिनियम के लिए डिफरेंट हो सकता है. द एक्सप्रेशन इज गोइंग टू चेंज, मींस द वैल्यू इज गोइंग टू चेंज, बट आपका जो डिफरेंस आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन कांस्टेंट है, सारे टर्म कांस्टेंट है, ये वेरी करेंगे फॉर मटेरियल टू मटेरियल. एंड योर इनकमिंग पार्टिकल का क्या कैरेक्टर है, वन आयोनाइज्ड है, डबली आयोनाइज्ड है, या 3+ का चार्ज है, या मासेस क्या डिफरेंस है. तो दिस इज गोइंग टू चेंज, एंड इवन z इज गोइंग टू चेंज एंड स्मॉल n is going to change as per your material selection. So this is called as stopping potential or stopping power, you can say, for any given material, for any given ion. Okay, now our aim is to find what is the value. इसको हम कई बार SEV में लिखते हैं, बुक्स में आपको इसका एक्सप्रेशन लिखा होगा SE. Sometime it is called as a specific energy loss. It is called as specific energy loss or stopping power of the medium. अच्छा, पोटेंशियल वर्ड हम नॉर्मली उसमें यूज करते हैं, दैट इज फोटोइलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ पे हम स्टॉपिंग पावर यूज करेंगे. तो स्टॉपिंग पावर ऑफ द मीडियम फॉर एनी गिवन पर्टिकुलर आयन. ओके, नाउ what is B maximum and B minimum? So let us calculate one by one. What is this one and how we will calculate this B minimum? B minimum is actually the all those particle. वैसे तो B minimum के दो expression हैं, one is classical and one is quantum mechanical. So if you permit, then we can do that both classical and we have B minimum quantum mechanical. दोनों को हम निकाल सकते हैं, और whichever is larger means whichever is dominating, we will use that one. तो पहले हम दोनों को निकाल लेते हैं individually and then we can see the ratio, what is the ratio of that, and we can say कि this one is dominating or this one is dominating with respect to other, so we will use that particular expression. B minimum के लिए बहुत सिंपल सा है. अगर हम क्लासिकल वे में चलते हैं, if we are focusing कि B minimum क्लासिकल वे में कैसे निकलेगा, what is this value is. So the energy is being transferred to the electron. We are, और B minimum होगा कौन सा, आपके जो closest, जो trajectory के closest हैं, means those electron which are doing head-on collision. ठीक है, those electrons which are doing head-on collision, क्योंकि एक trajectory के सबसे close वाले atom होंगे ना, तो जो maximum वो electron treat करने में जो head-on collision पे को follow कर रहे हैं, यानी they are doing direct interaction with the this particular incoming radiation. So what could be that value? अगर हम एक बार रफ सोचें कि वैल्यू होगी क्या या कितनी होगी, तो can you guess what that value could be? Because these are small particles, so what value we should use कि जहाँ पे वो direct interact करेगा. कितने दूर तक के पार्टिकल से इंटरेक्ट करेगा, मतलब हाउ मच, एटलीस्ट किस पार्टिकल को वो आयनाइज, एटम को आयनाइज करेगा. मींस देयर विल बी, हमारा जो पूरा डेरिवेशन है वो कूलम फोर्स पे रिलेटेड है, तो किस केसेस के लिए कूलम फोर्स को फॉलो करेगा और किस केसेस के लिए कूलम फोर्स को फॉलो नहीं करेगा. हमारा पूरा डेरिवेशन किस पे बेस्ड है, कूलम इंटरेक्शन पे तो बेस्ड है. हमने जो फोर्स इक्वेशन लिखा है वो कूलम का लिखा है, तो कूलम के ही फोर्स को हमें एंटरटेन करना है, कोई दूसरा हमें नहीं लेना है. अगर कोई दूसरा है तो we need to do the calculation of delta E again. So we have to understand in such a way कि
किस पार्टिकल के लिए, कितने डिस्टेंस के लिए वो वर्क करेगा कूलम इंटरेक्शन। क्लासिकल का थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है निकालने का तरीका, बट फिर भी क्वांटम मैकेनिकली इट इज वेरी सिंपल। There is one equation. You just need to say कि this is the value, and it will interact with those particle ones only within the closest range. Guess करो एक बार थोड़ा सा। सारा दिमाग लूमेन में ही चल रहा है अभी। करियर काउंसलिंग उधर हो रही है। हाँ, सारा दिमाग वहां चल रहा है। आई विल मेक यू फ्री, टेंशन मत लो। लेकिन एटलीस्ट वी हैव टू डू सर्टेन थिंग्स। बताओ तो गेस सर करो। कूलम। नहीं, कूलम इमेजिन करो। देखो क्वांटम मैकेनिकली बहुत सिंपल है समझना, लेकिन क्लासिकली थोड़ा सा इन्होंने कॉम्प्लिकेट कर दिया है। बट क्लासिकली भी आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि किस केस को ले रहे हैं। इफ यू हैव अ पार्टिकल एंड इफ यू आर नॉट, मींस दोज इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली जब आपके डिब्रॉय वेवलेंथ यानी लैम्डा, लैम्डा से डिस्टेंस पे हैं, जो भी लैम्डा होगा ना उतने डिस्टेंस पे हैं, अगर वो लैम्डा से क्लोज हैं तो दे विल डू हेड ऑन कोलिजन, they will not do the Coulomb interaction, means the ions is going to bombard directly to the electron. Coulomb interaction हो सकता है, उस बीच में भी हो सकता है, but there is a more chance कि they are going to hit the electron directly, so that will have a different interaction. हमें वहां पे सिर्फ Coulomb interaction को लेके नहीं चलना है, हमें दूसरे केसेस भी लेके चलने पड़ेंगे, बट हमारा पूरा डेरिवेशन Coulomb पे बेस्ड है। तो those electron which are sitting away with this lambda, यानी एटलीस्ट वो लैम्डा डिस्टेंस पे लाई कर रहे हैं फ्रॉम दिस इनकमिंग पार्टिकल, तो इस पार्टिकल का कुछ लैम्डा होगा डिब्रॉय वेवलेंथ, उस वेवलेंथ से बड़ा होना चाहिए डिस्टेंस, एटलीस्ट दैट शुड बी इक्वल टू लैम्डा, then only the electron will be away from this one and they will interact through Coulomb interaction. Agreed? Agreed? यस सर। इवन अगर दूर भी हैं, लैम्डा से भी दूर है, ऑब्वियसली हमारे पास बी मैक्सिमम की भी वैल्यू है ना, इवन इफ इट इज मोर देन लैम्डा, then also it will have a electrostatic interaction, तब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, लेकिन लैम्डा से जब कम होगा ना तो दैट विल हैव अ प्रॉब्लम, मींस यू डोंट हैव ओनली वन काइंड ऑफ इंटरेक्शन, यू हैव टू डू डिफरेंट थिंग्स। आपको सिर्फ इसी फोर्स पे रिलाई नहीं करना पड़ेगा, आपको दूसरे इक्वेशंस भी लेने पड़ेंगे, दूसरे कंडीशंस भी लेने पड़ेंगे। तो हमारा पूरा इक्वेशन जो है क्लासिकल वे में हमने डिराइव किया है, और हमें कूलम इंटरेक्शन को ध्यान रखना है, वी हैव टू रिमेंबर कि एटलीस्ट वो इलेक्ट्रॉन जो हेड ऑन कोलिजन नहीं कर रहे हैं। तो क्लासिकल में थोड़ा सा ना प्रॉब्लमेटिक तरीके से सॉल्व किया हुआ है, बट अल्टीमेटली वी विल फाइंड कि क्वांटम मैकेनिकल आपका ज्यादा डोमिनेटिंग होता है रादर देन योर क्लासिकल पिक्चर। क्लासिकल पिक्चर में बहुत ही सिंपल है। इमेजिन व्हाट दे हैव डन, अ बॉल विच इज ऑफ अ वेरी हेवी मास एंड हिटिंग अ बॉल विच इज अ वेरी स्मॉल, दिस इज इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज आयन। तो अगर ये किसी वेलोसिटी से हिट करता है तो ये कितना गेन करेगा, डायरेक्ट हिट कर रहा है, मींस इफ यू आर इमेजिनिंग कि ये डायरेक्ट हिट कर रहा है, इवन इसको भी हिट करेगा और वो भी इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा जो यहाँ पे भी आपके लाई कर रहे हैं, यानी एटलीस्ट इस रेंज में हिट करेगा, मींस दिस इज योर बी मिनिमम, दे हैव थॉट इन दैट वे। डायरेक्ट वाले तो करेगा ही करेगा, जो एटम है उसके बिल्कुल अलाइनमेंट में है, बट दोज इलेक्ट्रॉन विच आर जस्ट एट द टच, मींस इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रॉन लाई कर रहे हैं इसको भी वो हिट करेगा। तो आपको ध्यान है कि अगर हेवी मास किसी लाइट मास को, इफ इट इज मास इज वेरी स्मॉल, देन what is the velocity which is transferred to this electron? अगर कोई हेवी कोलिजन, सिंपल कोलिजन क्लासिकल वे में चलेंगे तो सिंपल जो कोलिजन प्रिंसिपल होता है उसमें अगर हेवी मास कोई है किसी वेलोसिटी से आ रहा है और वो हिट कर रहा है किसी इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन के पास कितनी वेलोसिटी होती है, मींस लाइटर मास के पास क्या होगी वेलोसिटी, हाउ मच दैट इलेक्ट्रॉन विल गेन द वेलोसिटी, हाँ, या मैक्सिमम जो वेलोसिटी गेन कर सकता है दैट वी कैन से v होगा, या v/2 होगा, या 2v होगा। बताओ। कोलिजन वाला है, मतलब कोलिजन वाला आप जो करते हो काम,
हमने कोलिजन वाले बहुत सारे किए हुए ना, जिसमें ये लाइटर है, वो हैवी है, ये हायर वेलोसिटी से आ रहा है, वो रेस्ट है, दूसरा भी वेलोसिटी से आ रहा है। तो बहुत सारे केसेस हम डिस्कस करते हैं। तो एक केस ये भी होता है कि आपका इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, इफ वी आर इमेजिनिंग कि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, तो वी विल इमेजिन कि दिस इज एट रेस्ट एंड दिस इज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी। देन व्हाट इज द velocity gained by this electron after the collision, after the direct hit? ये होगा, चेक करो collision वाले वो याद करो। The velocity a lighter particle which gain is 2 times of the velocity of the incoming particle if it is very heavy. चेक करना, 2 times होता है velocity, नहीं होता है? Yes or no? चेक करो इसको कि देखो वेलोसिटी आप गूगल पे टाइप Yes, sir. करके, वेलोसिटी आपकी जो गेन होती है ना, लाइटर जो मास होता है और हेवी मास से जब हिट होता है, तो हेवी मास का जो भी वेलोसिटी को 2 टाइम्स गेन करता है ये। वी कैन इजीली डू दिस कैलकुलेशन, इसके लिए कोई ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं, यू कैन चेक योर ओल्ड क्लासिकल मैकेनिक्स के नोट्स चेक कर सकते हो। एंड वी आल्सो नो दैट हाउ मच एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन्स। ये एक्सप्रेशन भी हमें पता है कि अगर उसने वेलोसिटी इतनी, मैक्सिमम वेलोसिटी जो गेन कर सकता है वो इतनी है, और हर एक इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी ट्रांसफर हुई, दैट इज E4 ड्यू टू द कूलम इंटरेक्शन, दैट इज 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर m mass of electron, v square, v is the velocity of this one, ठीक है, velocity of this one which is ion, and there is a factor b square, यानी कितने डिस्टेंस पे है वो डिसाइड करता है कि आपके पास एनर्जी कितना गेन करेगा। तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी गेन करेगा जिसकी पॉसिबिलिटी है वो सबसे क्लोजेस्ट वाले पे होगा, यानी बी। अगर इस एक्सप्रेशन को यूज करते हैं और वी assume कि electron gains this much of velocity, it means we are talking about b minimum। उससे जो दूर होगा means those electron which is away from this distance they will gain lesser, means they will gain the उनकी जो इलेक्ट्रॉन की velocity होगी that will be less than 2v। agreed? Agreed? Whatever Yes, the sir. electron which is away from this distance they will gain lesser, because obviously the coulomb interaction is going to decrease। आपका कूलम इंटरेक्शन 1/r² पे डिपेंड कर रहा है, तो वो डिक्रीज होना ही होना है, इसमें कोई है ही नहीं। मींस फोर्स इज गोइंग टू डिक्रीज, इफ फोर्स इज गोइंग टू डिक्रीज द मोमेंटम ट्रांसफर इज गोइंग टू डिक्रीज, इट मींस द वेलोसिटी इज गोइंग टू बी लेस देन 2v। सो मैक्सिमम वेलोसिटी आपका कहां पे होगा, which is at the closest distance, and what we have taken, we have taken this as the distance which is having a head on collision। आपके हेड ऑन तो एक होगा ही पॉसिबिलिटी, इवन जो आपके बाउंड्री टू बाउंड्री बिल्कुल टच हो रहे हैं दे विल आल्सो डू द हेड ऑन कोलिजन। सो दिस इज आवर बी मिनिमम। Okay, now this electron energy is given by this expression which we have already calculated, so we can replace this one as half me। अब me को मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, me को मैं फिर से m लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भी हमने m यूज किया है, me ve maximum square। अब इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे इक्वेट कर देंगे। From here we can easily find what is the value of b minimum। Just equate them। आपका m नीचे आ जाएगा, स्क्वायर b को यहाँ लेके आ जाओ, b स्क्वायर हो जाएगा, वेलोसिटी स्क्वायर में है वो नीचे जाएगा तो 4th पावर में आ जाएगा, क्योंकि ये जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन का आप जो वेलोसिटी लिख रहे हो इसको आप क्या लिख दोगे, यू कैन राइट इन दिस वे, हाफ m, this number is 2 times of this one, so that will become 4v square। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपका ये बन गया, तो आप सारी चीजें मैनेज कर सकते हो इजिली, कैंसल आउट या कुछ भी कर सकते हो। सो यू कैन गेट इजिली द वैल्यू ऑफ बी मिनिमम इन द क्लासिकल सेंस, दैट इज जेड ई स्क्वायर। अब ये सब रूट में चले आएंगे क्योंकि बी स्क्वायर है ना, तो दैट विल बी अ रूट फैक्टर, सो दैट विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक बार जरा चेक कर लो कि यही एक्सप्रेशन आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, what was the idea, that those electron we have to count all those electron which will do the head on collision, and what is the minimum distance we require for that, that is b minimum। Clear? is it clear? अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, otherwise if it is clear then we can
move ahead. ठीक है? Okay, so I've got a thumbs up. So it's a very simple classical way. Head-on collision, this is heavy, this is light, this is the maximum velocity transfer, and that maximum transfer will be at the B minimum. We know how much velocity is transferred, so we can easily calculate how much. We know the energy expression for the electron, which is being how much energy is gained. We will equate with the kinetic energy, and we just find the value of B minimum. That's all. Okay, so this is ये last वाला जो expression लिखा है, that is the relativistic correction if the velocity is in range of rest mass. तो rest mass के आसपास होगा तो we need to put the relativistic correction. ऊपर वाला expression भी आप use कर सकते हो, but this is a relativistic correction. 1 minus beta, beta आपको पता है V upon C होता है. So you know very well. Now, what is B minimum? Quantum mechanical. De Broglie wavelength. And हम यहाँ पे जो de Broglie wavelength निकाल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं कि what is the de Broglie wavelength of electron for a given ion. Just imagine, ion is moving with certain velocity, electrons are at rest. Just reverse the frame. Electron is coming towards the ion and ion is rest. It means electron is approaching towards the ion with the velocity v. Just एक रिवर्स कर लो, वो कुछ बहुत वो यूनिक चीज नहीं है कि उसको समझने में मुश्किल होगा. If one is moving with the velocity v and another is kept at rest, then with respect to that rest particle, if you are in that frame, then what is the if you are in the rest frame of the ion, then what is the velocity of electron? So that will be moving with v but in the opposite direction. तो दोनों की velocity same होगी. So how much आपका आयन का de Broglie, या ये समझ लो कि आप जो इलेक्ट्रॉन de Broglie wavelength पे है, and those electron which are looking at the ion which is at a distance of de Broglie wavelength, so they will follow the Coulomb interaction. उससे जब कम हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन का de Broglie wavelength अगर कम हो जाएगा, तो they will start doing the different kind of interaction. और obviously आपके ये जो पूरा फॉर्मूला है ना, they are approximate formula. इसमें कोई वैसा नहीं कि बिल्कुल accurate यही होगा. There are other things are happening, but their domination is less. उनकी dominations कम है. तो maximum domination आपका ionization process ही है. Ionization process भी कैसे है? आपके Coulomb interaction से है. So that we can easily write as h bar divided by mv. So de Broglie wavelength of electron as seen by the ion. De Broglie wavelength of electrons as seen by the ion. At least इतना distance maintain करना है. इससे कम हो गया तो आप फिर दूसरे interaction भी करना शुरू कर दोगे. तो you have to maintain this distance. So this is a quantum mechanical B minimum. It is very simple. इसमें कोई बहुत ज़्यादा logic नहीं लगाना है. आपके पास de Broglie wavelength से ज़्यादा होना चाहिए distance, otherwise you will perform different functions. Now we can easily calculate what is the ratio of, मीन्स हमें क्या चेक करना है कि कौन सा बड़ा है. आपके बी मिनिमम आपने दो एक्सप्रेशन से निकाले हैं, दोनों एक्सप्रेशन में से कौन सा बड़ा है. तो यू कैन फाइंड द रेशियो ऑफ दिस वन, एंड दिस नंबर इज वेरी स्मॉल. आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट इट, but you can easily do the calculation if the proton, or you take alpha particle or any other particle also, any charge particle, if their energy in the range of 10 mega, even 20 mega electron volt rakh lo, you can easily put any particular energy value and just calculate this number. आपके पास बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है. अगर प्रोटॉन ले रहे हो तो z की वैल्यू 1 हो जाएगी, अल्फा ले रहे हो तो 2 हो जाएगी, बाकी सारे टर्म्स कांस्टेंट है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है. सो यू कैन इजीली फाइंड द रेशियो. बहुत सारी चीजें कैंसिल हो जाएगी और लेफ्ट विद वेरी स्मॉल नंबर्स. बीटा का एक टर्म रहेगा. बीटा की वैल्यू इस एनर्जी से डिसाइड हो जाएगी कि आपने क्या, आपकी काइनेटिक एनर्जी आपने इनकमिंग पार्टिकल की रखी है, तो उसकी v by c की वैल्यू निकालनी है आपको. So that number is very small. This number is very small, and everything will become very small. इसमें एक hyperfinest splitting factor भी है, that is 1/137 होता है. वो डिनोमिनेटर में आता है तो वो 0.00 something number देता है. तो this is very small. It means we can use B minimum as B minimum quantum mechanical for our calculation, because classical is very small, that effect is very small. जो classical हमने
अज्यूम किया ना, उसका इफेक्ट बहुत कम है. तो both number will give me different value, but this is more dominating. So we have to disregard this classical picture. So we have to take this one. Okay. Now we come to the B maximum. So B maximum, यहाँ तक ठीक है या फिर इसे और समझाना है, या if it is okay, then we can move forward. I think that is B maximum. Yes. B maximum Yes, भी sir. ठीक है ना. कोई वैसा देखो, इवन अगर आप एग्जाम में ये नहीं करते ये वाला पार्ट, दिस इज जस्ट फॉर योर, इफ यू डोंट डू दिस पार्ट, no one is going to cut your marks. You just write this one, that what is the de Broglie wavelength of electrons if you see that from the means it is from the frame of your this ion. तो ion जब आप उस frame से देख रहे हो तो ion is at rest and the electrons are moving with v velocity in the opposite direction. So what is the de Broglie wavelength of those electrons? And all those electrons which is away from the de Broglie wavelength, they are going to do the Coulomb interaction, and those which is within that range, they are not going to do the Coulomb interaction. So our whole of the theorem is based on the Coulomb interaction, so we have to consider those electrons only. So this is very simple, you can write it directly, कोई दिक्कत नहीं है. एक स्टेटमेंट लिख दोगे तो कोई मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है, ये अगर नहीं भी लिखते तो. Okay, let us come to the B maximum. B maximum is for those electrons, means they are how much away. अब पूरा मैटर तो पूरा filled है, अब कितने दूर के इलेक्ट्रॉन को आप आयनाइज कर सकते हो. दिस इज व्हाट द वी हैव टू थिंक कि if the charge is moving, if the proton is moving, alpha particle which is the incoming ion is moving, its strength means up to what distance it can ionize the atom. This is what we have to calculate. अब हमारे आयोनाइजेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट हमने फैक्टर लिया था, जो उसी को हमें ध्यान में रखना है. पूरे डेरिवेशन में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था. इफ यू रिमेंबर that this was the picture, this is the electron and this is the trajectory of this particle, and at any instant this is the force, and we have converted into two parts, fx and fy, and we have removed this factor. There is no x component because we assume कि जब particle move कर रहा है तो एक आपका opposite x और दोनों simultaneously appear हो जाते हैं, लेकिन fy हमेशा इसी direction में हो. All the fy is going to contribute, but fx has to appear simultaneously. So this thing I have to remember, we have to remember. Okay, just hold on. So तो ये हमें ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि ये इलेक्ट्रॉन शांत नहीं है, ये तो घूम रहा है. इट इज मूविंग इनटू अ ऑर्बिट, एंड ऑर्बिट में मोशन इसका ऐसा होना चाहिए कि these two forces appear simultaneously at the same point, then only you can cancel them. अगर ये different point पे appear होते हैं इस trajectory के, means when the force this force, general force is, if it is in this direction, this force appears somewhere here, somewhere here, and if this particle moves to this side, means आपने last time r और m लिया था शायद, if I remember the notations. If it is at m, then the force appear on other side. So if the force is not aligned, then there will be a torque. So that is not going to remove the electron from the atom. We have to assume that these two forces should cancel out and only fy should remain. So this is what we have to remember. ये हमें ध्यान रखना है. तो अब मैं उस लाइन को लिख रहा हूँ, और देखो कि अगर टाइम ऑफ कोलिजन, जितना टाइम कोलिजन मींस कोलिजन इज एक्चुअली द कूलम इंटरेक्शन, हाउ मच टाइम द कूलम इंटरेक्शन इज देयर विद द आयन एंड द इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में जो कूलम इंटरेक्शन, how much time that has been there between these two entity. So that is roughly equal to B upon V. इसको जरा इमेजिन करो, ये नंबर सोच के देखो कैसे लिखा है और क्यों लिखा है हमने. V by V,
Can we write that b is in y direction and v is in x direction? ऑब्वियसली टाइम का तो फैक्टर आएगा ही, क्योंकि हम डिस्टेंस बाय वेलोसिटी कर रहे हैं, तो वी विल गेट द यूनिट ऑफ टाइम. b is a general distance, means trajectory. Yes, sir. ट्रेजेक्टरी इज दिस वन. कैसे हुआ मुझे बताओ. मुझे नहीं समझ में आया. Distance upon velocity. नहीं, वो तो यूनिट दे देगा मैं, ठीक है. दैट विल गिव मी द यूनिट. इट्स ओके, दैट इज ओके. वो तो यूनिट टाइम का देगा ही देगा. दैट इज इन सेकंड्स. तो टाइम का यूनिट है ही, कोई दिक्कत नहीं है. इमेजिन दिस वन. इफ द इलेक्ट्रॉन इज समवेयर हियर, इफ द इलेक्ट्रॉन, मैंने 3 केसेस दिए. पार्टिकल की वेलोसिटी फिक्स्ड है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी उसकी v, और वो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस. इट इज नॉट अल्फा पार्टिकल के लिए जो रेंज है ना, अगर अल्फा पार्टिकल अब किसी लेड या किसी में आप उसे बम्बार्ड करते हो, तो उसका जो रेंज है, दैट रेंज इज हार्डली अ मिलीमीटर, फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर. So you can imagine this number is very small with respect to beta और गामा. गामा का सेंटीमीटर्स में चला जाता है, टेंस ऑफ सेंटीमीटर हो जाता है, और बीटा का कुछ सेंटीमीटर जाता है, और इवन नॉट एग्जैक्टली सेंटीमीटर बट फ्रैक्शन ऑफ सेंटीमीटर, मतलब 0.1 0.5 सेंटीमीटर के फॉर्म में 10 टाइम्स ज्यादा होता है. और गामा तो बहुत ज्यादा, 10 सेंटीमीटर, और मे बी सम टाइम इट इज इन गैसियस और लिक्विड सिस्टम इट गोज अप टू मीटर आल्सो, बिकॉज द एनर्जी इज वेरी हाई एंड देयर पार्टिकल आर वेरी लाइट. अल्फा क्यों है? अल्फा और प्रोटॉन वगैरह क्या है? दे हैव एनर्जी, गुड एनर्जी. बीटा से ज्यादा एनर्जी होता है, गामा से भी ज्यादा होता है, बट देयर मास इज वेरी लार्ज. तो मास के कारण थोड़ा सा उसके पास मोशन रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है कि यू कैन नॉट गो फर्दर. सो दिस वी कैन सी कि ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है इन अ गिवन टाइम, वो तो फिक्स्ड है. और उसी टाइम में, मींस इफ इट इज मूविंग इन दिस वे, मींस वी कैन इमेजिन कि डेल्टा एक्स जब ये मोशन कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो जो भी टाइम ये लग रहा है, मींस इंटरेक्शन के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन इसको व्यू हो रहे हैं, या जितने भी उसके कूलम इंटरेक्शन के रेंज में है, तो दिस इज फिक्स्ड. मींस व्हाई वी आर टेकिंग, व्हाई वी आर, एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए? इंटरेक्शन टाइम तो हमें डेल्टा एक्स बाय वी करना चाहिए था, because it is moving in this way and the delta x has to be in this way. But when it is moving, it interacts for a longer time for this particle, क्योंकि उसके लिए डिस्टेंस अगर ड्रॉ करते हो, तो आप जब आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करोगे एक पर्टिकुलर लेंथ के लिए, और फिर दूसरे केस के लिए, तो इट विल हैव लेसर and this will have further more lesser way. Means as you move away from this one, the interaction time decreases because that has to decrease. वो आपकी लिमिटेड है, वो आप उसको इंक्रीज नहीं कर सकते. वो तो वेलोसिटी यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक उसे एंड होना ही होना है. तो ये जो मैंने लेंथ बनाई, ये रफली अगर इमेजिन करो, मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन, वैसे मतलब इतना आसान नहीं है, बट एज यू इंक्रीज द ट्रायंगल, मींस एज यू इंक्रीज दिस हाइट, योर इंटरेक्शन टाइम हैज टू बी लेस. यू विल डीके फास्टर. योर आपका जो कूलम इंटरेक्शन का टाइम है ना, थोड़ा सा कम हो जाएगा. तो हम y डायरेक्शन के डिस्टेंस को हम x डायरेक्शन के वेलोसिटी से कंपेयर कर. एंड व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग, one which is nearer, it will have good amount of time to do the interaction. When the particle which is, means electron which is at a larger distance, it will have lesser time, क्योंकि एक इवन किसी भी फील्ड के लिए या किसी भी फोर्स के लिए प्रोपेगेट करने का एक लिमिटेड वेलोसिटी है, and that is you cannot cross the sea. So if even यहाँ पे C का उतना रिलेवेंस नहीं लगेगा, because all the things are very close to each other, so you don't imagine कि C का कोई interaction हो रहा है, but you can easily imagine कि जितना आप दूर चलते जाओगे, आपका जो पाथ लेंथ है वो धीरे धीरे आपके लिए कम होता जाएगा. So if you are away, you will have lesser time for interaction. If you are close, you have more time of interaction, because distance has, आप distance देखो, यहाँ पे अगर R है, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, that is goes on increasing as you move away. So it is difficult to understand, but we can imagine that as we move away, the interaction time decreases. Now, how much this time should be equal to in comparison to the orbital velocity of electron?
क्योंकि अगर उससे ज्यादा है या उससे कम है, means let me write in other way, that orbital velocity or time period of the electron in any orbit can be given as 2 pi by omega e. Omega is the angular velocity of the electron. We can easily find using Bohr model, or you can roughly say it is 1 upon omega e. 2 pi को भी भूल जाते हैं, 1 upon omega e. It means when the particle, अब दूसरा मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, when the particle is here, means at distance r, the electron is here. When the particle reaches to m, the electron has completed a revolution, again it has come back to this one. ठीक है, then only due to these two positions the fx will appear simultaneously. Is it clear? Fx due to r and fx due to m, they have to appear simultaneously along a same line. This is only possible if the when the particle has moved from here to here, the electron is having a motion, वो अपने orbit में move भी कर रहा है, तो और it has moved from here and it's come back to this point. So any general cases, if you imagine this two numbers, means यहाँ पे कितना उसका interaction होगा, that interaction should appear at the same point. अगर हमारे पास time period match नहीं करता है दोनों, टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, अगर कम है तब तो इट्स ओके, इट विल डू 2 revolution, it will do 3 revolution, again it will come back here. If the time is very large, then it has reached to this point only and the particle has reached to m, and you have a different force, you have not the alignment of these two forces, so fx will cannot be 0. Understood why we are so means emphasizing that this how much time it has took from here to here. So जिसको हम interaction time कह रहे हैं, यानी जिसको हम कह रहे हैं interaction time को मैं tau लिख देता हूँ. So this tau should be equal to te, roughly, not exactly, but we can say roughly. और those means as you move away, आपका ये decrease होना शुरू हो जाएगा, ये increase होगा. अगर ये increase हो रहा है और ये decrease हो रहा है, means दोनों cases में, if it is increasing, I think if it is close, then it should be faster. I think मतलब मेरे को थोड़ा सा अभी समझने में दिक्कत हो रही है कि अगर if it is very close, then what will be the this is going to increase. If it is close, then this time is going to increase. So it will have interaction. Yes, yes. So we have to imagine in such a way that when it is at distance r, if this force appear, and when it is at distance m, the force which is appearing in this direction, they have to appear simultaneously at the same point. It is only possible if these two times are comparable to each other. अगर comparable नहीं है तो ये different point पे generate होंगे and you cannot cancel out the effects, and that is possible. उसमें क्या केस हो जाता है, आयोनाइजेशन ना हो करके आपके पास एक्साइटेशन हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट भी करते हैं. मींस आउट ऑफ 100, 3 or 5 or 10% atoms could go into excited state and after that they will emit a photon. That is also possible, but वो हमारे लिए इस केस में डोमिनेटिंग नहीं जब अल्फा पार्टिकल या प्रोटॉन से आप किसी मटेरियल में एंटर करते हो तो. ठीक है, so this has to be comparable, means time period of the electron in the orbit should be compared to the time of collision or time of interaction of the incoming particle. ठीक है, so we can do the comparison, we can equate them, that is B maximum upon V must be equal to 1 upon omega E. It means that will give me B maximum must be equal to V by omega E. 2 pi को मैं यहाँ पे छोड़ दिया, but V by omega E. So we can multiply H bar, divide by H bar, and we will get H bar velocity को तो यहीं छोड़ दो. H bar omega E को you can write as I, where I is ionization energy of the electron, or you can say average ionization energy of electron in atom. एटम में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन है, 50 इलेक्ट्रॉन है, तो उनका एक एवरेज वैल्यू, तो दैट एवरेज वैल्यू विल बी h बार ओमेगा. h बार ओमेगा कुछ भी नहीं है, आपका h बार मीन 2 पाई डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 2 पाई करो तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, तो h नहीं हुआ है हमारा फॉर्मूला. तो दिस इज कंसर्न्ड विद द ऑर्बिटल मोशन, and this you can write as h bar by this one. And if you further include the relativistic correction, अगर relativistic correction include करते हो तो velocity को आपने divide कर देना है root of 1 minus b square.
ठीक है, तो रिलेटिविस्टिक हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली उसको एक्सप्रेशन को लिख रहे हैं. सो वी हैव गॉट बी मैक्सिमम आल्सो एंड वी हैव गॉट बी मिनिमम आल्सो. बी मिनिमम हमने ऊपर कहीं लिखा था, ये रहा. So we can write again the SE formula. SE की वैल्यू मैंने ऊपर लिखी थी कहीं. Yes, this one. So B maximum by B minimum हमें चाहिए. तो B maximum is how much? That is H bar. And let me write it here only. यहाँ पे space है थोड़ा सा. इसको यहाँ पे खत्म करते हैं. Then I will make you free because electron का interaction हम बाद में करेंगे. B maximum by B minimum. Log के अंदर का जो term है, that is what we have to write. This is H bar, velocity of the ion, ionization of the electron, average ionization, root of 1 minus beta square into or divided by B minimum divided क्या है, this term, this one. B maximum एक मैंने velocity, अच्छा velocity इसमें भी हमें quantum mechanical correction डालना पड़ेगा. Okay, it's okay. क्योंकि मेरे पास दो टर्म आने चाहिए ये. सो बी मिनिमम इज एच बार नीचे आ जाएगा, एम और वी ऊपर चले गए, एच बार यहाँ पे आ गया और वी के साथ नीचे रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर वाला टर्म आ गया. सो दिस इज इक्वल टू एच बार कैंसिल हो गया. इट इज एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई एंड 1 माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, लॉग में आ गया. लॉग में इन दोनों को आप अलग लिख सकते हो या फिर लॉग में डायरेक्टली एल एन ऑफ ब्रैकेट के अंदर ये दोनों. अब इसमें थोड़ा सा और करेक्शन है बट वो हम बाद में करेंगे. So this expression now it become, if you put all the B maximum, B minimum, then energy lost by the ion when it is moving in a matter, means heavy ion actually, that will be equal to Z square E4 number density 4 pi epsilon naught square m mass of electron V square ln of what we have found, that is mv square mv square divided by I and ब्रैकेट में 1 माइनस बीटा स्क्वायर. ठीक है, इसमें और भी करेक्शन है. इफ यू दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द बोर फॉर्मूला फॉर द स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पावर. बोर फॉर्मूला फॉर द स्टॉपिंग पावर, बट देर इज अ बिट करेक्शन. उसमें वहां पे 2 का फैक्टर आ जाता है और माइनस ऑफ 1 प्लस बीटा स्क्वायर का भी फैक्टर आ जाता है. when you use this derivation, जो आपने डेरिवेशन अभी पूरा किया ना, इसमें स्टार्टिंग से हमने क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग की है और उसके बाद लास्ट में हमने क्वांटम मैकेनिकल और रिलेटिविस्टिक टर्म्स डाल दिए हैं. बट इफ यू डू विद द स्टार्टिंग विद द रिलेटिविस्टिक एंड क्वांटम मैकेनिक्स, देन यू गेट अ डिफरेंट एक्सप्रेशन दैट इज नॉट वेरी डिफरेंट. इतना भी निकाल दोगे तो एग्जाम में कोई काटेगा नहीं, बट एक और लाइन लिखनी होती है. दैट एग्जैक्ट वैल्यू इज दिस वन. लेट मी राइट इट हियर ओनली. दिस इज बोर फॉर्मूला एंड एग्जैक्ट वैल्यू आफ्टर डूइंग ऑल द करेक्शंस वो हमारे डेरिवेशन में ही आ सकता है. मास्टर्स में आप कर सकते हो डेरिवेशन. हियर यू डोंट हैव टू डू दैट डेरिवेशन. सो दैट इज 4 पाई. एवरीथिंग इज सेम, all the things are same, there is no big difference, only logarithmic term is going to change. So that is becoming 2 mv square divided by ionization 1 plus beta, 1 minus beta square and minus of beta square. So this is the final expression for the stopping power for any given ion for any given material. ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन भी अगर लिख देते हो that is okay. ठीक है, but you can write this, and this is actually the called as Bethe Block formula for stopping power. अब इसका एक ग्राफ है, ग्राफ हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे. उसके बाद इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन है. इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन में हमें कोई डेरिवेशन नहीं करना है. वी डोंट हैव टू डू एनी डेरिवेशन, वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द प्रोसेस, दैट्स ऑल. तो वहां पे आपको डेरिवेशन कुछ नहीं. डेरिवेशन इज मोर डिफिकल्ट with respect to this one because that is moving with relativistic. Beta particle हमेशा relativistic form में ही move करेगा. You cannot use classical picture to understand because certain limit alpha particle आपके classical way में behave कर रहा है, but beta particle is always in the relativistic because उसका rest mass ही 0.5 होता है और उसकी energy 1 mega electron volt के आसपास है. So that is you cannot disregard relativistic and quantum mechanical corrections. तो वहाँ पे हमें derivation ही उस तरीके से जाना पड़ता है. That we don't have to do. We have to just understand the process. और फिर उसके बाद हमारा रह जाएगा
गामा इंटरेक्शन। गामा में 3 कंपोनेंट है और तीनों कंपोनेंट हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से 2 कंपोनेंट आपको पहले से ही पता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट and the Compton effect. You know very well these two. The third one is the pair production, and pair production को हम डिस्कस करेंगे क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास we will finish off this topic unit actually. तो मंडे हमारा ये यूनिट खत्म हो जाएगा। And those who want to connect in the tutorial class, they can come and they can discuss whatever you want to discuss today. And if you want to do the Lumen lecture, you can go there also. ठीक है, आज के लिए इतना ही है। और आप अगर ट्यूट में आना चाहते हो तो ट्यूट में आके you can discuss something, and otherwise you can attend the Lumen. I will start the meeting of Tute also, but it is up to you. तो आज के लिए मैं फ्रीडम दे रहा हूँ कि आप वहाँ पे ज्वाइन करें। वैसे तो फ्रीडम आपके पास हमेशा ही रहता है। You are never compelled for anything. Okay, so let me just stop the recording. एंड थोड़ा सा ना नोट्स अभी जो मैं शेयर करूंगा ना, इस हफ्ते के बाद करूंगा। थोड़ा सा मेरे पास अभी टाइम कम है, मे बी नेक्स्ट वीक तक मैं आपको कर दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा रिएक्शन वाला भी पार्ट रह गया। इसमें आपके पास कंपाउंड और कंपाउंड न्यूक्लियस रिएक्शन रह गया, डायरेक्ट रिएक्शन रह गया और रेजोनेंस रह गया। वो नोट्स भी आपको नहीं दिए मैंने, सिर्फ शायद रदरफोर्ड स्कैटरिंग तक आपको दिए मैंने, तो वो रह गया। और इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, ये भी रह गया है। इसमें भी आधा पार्ट हमारा खत्म ही हो गया करीब करीब। तो दोनों प्रिपेयर करके बाय नेक्स्ट वीक, बाय एंड ऑफ द नेक्स्ट वीक आई विल गिव यू द नोट्स। तो थोड़ा सा भी टाइम थोड़ा सा कम है, इसलिए प्रॉपरली नोट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। ओके, सो यू कैन लीव। आई जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग। ओके, so those who want to connect through the tube, they can connect. Otherwise you can enjoy your Lumen lecture about the different career prospects you have, you can take. वैसे तो सभी ने डिसाइड कर लिया होगा थर्ड ईयर वाले बच्चों ने, बट फिर भी कुछ ऐसा लगे कि नया है तो you can go there. Okay, so bye bye for now. We are meeting on Monday.